After some days, the thread broke. Poor Sheikh Chilli. He thought, today is the last day of my life. He went to the cemetery. He dug a hole. He lay down in it. He fell asleep. A man was passing through the cemetery. He heard Sheikh Chilli snoring. He was scared. He thought, it is a ghost. He peeped into the hole. He saw Sheikh Chilli sleeping. He asked him, what are you doing? Sheikh Chilli said, don't talk to me. I am dead. The man said, you are not dead. Come out. Sheikh Chilli was happy. He came out of the hole. कुछ दिनों के बाद धागा टूट गया। शेख चिल्ली को लगा, आज मेरा जीवन का आखिरी दिन है। वह कब्रिस्तान गया। उसने एक गड्ढा खोदा। वह उसमें लेट गया। उसे नींद आ गई। वह सो गया। एक आदमी कब्रिस्तान में से गुजर रहा था। उसने शेख चिल्ली की खर्राटे सुनी। वह डर गया। उसे लगा भूत है। वह गड्ढे में झांका। उसने शेख चिल्ली को देखा। उसने शेख चिल्ली से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शेख चिल्ली ने कहा, मुझसे बातें मत करो, मैं मर गया। आदमी ने कहा, तुम नहीं मरे, बाहर निकलो। शेख चिल्ली खुश हुआ। वह गड्ढे में से बाहर निकल गया।